हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड आफ्टरनून, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम जो टॉपिक पे बात करने जाने वाले हैं वो टॉपिक है इन केस यू लॉस्ट योर बायोमेट्रिक रेसिडेंट परमिट। ये जो बायोमेट्रिक रेसिडेंट परमिट क्या है, तो बायोमेट्रिक रेसिडेंट परमिट ये है कि व्हेन यू अराइव इन यूके, हाउ लॉन्ग यू स्टे इन यूके। ये जो बायोमेट्रिक रेसिडेंट परमिट होता है उसके अंदर आपका वीज़ा की डेट होती है, फ्रॉम व्हेन विच डेट टू विच डेट यू स्टे इन यूके। सो ये बायोमेट्रिक रेसिडेंट परमिट का होता है कि आप अगर 2022 में आया हो तो 2022 से 2024 का आपका इधर का रेसिडेंट का एक स्टेटस होता है उसमें। सो अगर ये आपका बायोमेट्रिक रेसिडेंट परमिट अगर आपसे कहीं गलती से खो जाए या कहीं आप इसको इफ़ योर बायोमेट्रिक इज़ लॉस्ट, राइट, so what the necessary step you have to do for this biometric resident permit. So for this biometric resident permit, if you are in UK or if you are not in UK or if you are around the world, you directly need to report for the stolen. So you need to report first to UKVI that your biometric resident permit, your BRP is stolen. These things you can do if you are in UK, if you are not in UK. बायोमेट्रिक रेसिडेंट परमिट का जो भी जो नेसेसरी स्टेप है, फर्स्ट थिंग्स आपको आपका बायोमेट्रिक रेसिडेंट परमिट जो स्टोलन हुआ है वो यूकेवीआई में रिपोर्ट करना है। अगर आप यूके में हो तो आप बायोमेट्रिक रेसिडेंट परमिट को रिप्लेसमेंट जो कार्ड आता है उसको रिप्लेसमेंट के लिए आप एप्लीकेशन कर सकते हो। अगर आप यूके में नहीं हो, दैट मीन्स इफ़ यू आर अराउंड द वर्ल्ड, अगर आप यूके में नहीं हो तो यू वॉन्ट एबल टू अप्लाई फॉर द रिप्लेसमेंट कार्ड। Whenever you are in UK, then and then you can apply for biometric resident permit replacement. So you can follow the link in my description box, which I mentioned that how to do this process for the biometric resident permit. So you just click the link below and do the process. Once you apply for the replacement card, you have to wait for another new replacement card. काफ़ी सारे लोग का ऐसा भी होता है कि जब हमने बायोमेट्रिक रेसिडेंट परमिट रिप्लेसमेंट के लिए दे दिया है तब हमारा जो पुराना जो बायोमेट्रिक रेसिडेंट परमिट था वो हमको कहीं से मिल जाता है। यू हैव टू सबमिट दिस बायोमेट्रिक रेसिडेंट परमिट टू यूकेवीआई एंड wait for the new biometric resident permit. You have to cut that biometric resident permit, which one is old one. And the most thing is whenever you lost your biometric resident permit, you have to report that things within 3 months. If you weren't able to report that things, you will get some fine and you will get trouble in future as well. And for this, what are the necessary steps you need to take whenever you lost your biometric resident permit? This is only applicable if your visa expire within 3 months, then you can apply for this biometric resident permit replacement. Otherwise you have to apply for the replacement visa. You should apply for the replacement immediately if you're planning to leave the UK within 3 months. Third thing, what should you do अगर आप यूके में नहीं हो और अगर आपका बायोमेट्रिक रेसिडेंट परमिट आपसे कहीं से स्टोलन या खो गया है आपसे, तो आपको क्या नेसेसरी स्टेप करना है। तो फर्स्ट थिंग्स यू नीड टू रिपोर्ट टू यूकेवीआई. Secondly, you won't able to apply for the new BRP. You have to apply for the replacement because आप यूके में नहीं हो. अगर आप यूके में होते तो आपको न्यू BRP के लिए आप एप्लीकेशन कर सकते हो. अगर आप यूके में नहीं हो तो आपको रिप्लेसमेंट वीज़ा के लिए एप्लीकेशन करना पड़ेगा. और ये जो रिप्लेसमेंट वीज़ा है उसको रिप्लेसमेंट BRP वीज़ा कहते हैं. थ्रू दिस यू कैन कम टू द यूके एंड then once you arrive in UK, you can apply for the new biometric. This is commonly happen when your biometric resident permit is missing within 3 months, then you can apply for this biometric resident card. In case you can found your biometric resident permit after you report it's missing, whichever the old one, अगर आपने न्यू बायोमेट्रिक कार्ड के लिए अगर एप्लीकेशन कर दी है और जो मिसिंग जो अपना BRP कार्ड था वो आपको अगर कहीं गलती से मिलता है तो आपको वो BRP कार्ड आपके साथ रखना नहीं है. उसको क्या करना है कि मेरा जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें मैंने डिटेल डाली है. अगर आपका जो स्टोलन हुआ जो BRP आपको मिलता है तो यू हैव टू सेंड इट बैक टू UKVI एंड यू हैव टू कट इनटू लाइक हाफ सेक्शंस एंड यू हैव टू सेंड इट टू UKVI एज वेल. You have to send that old BRP into white envelope to UKVI. So you can see my screen here as well, and in my screen you can see that what are the necessary steps you need to take for the biometric resident permit. अगर हमारी जो resident permit BRP अगर हमसे कहीं पर lost या stolen हो जाती है तो we have to report these things if we are in UK or if we are not in UK. So यहाँ पर clearly mention है the home office once you report it the home office will contact you. यहाँ पर आप देख सकते हो कि सब कंटेंट दिया हुआ है
कि कौन सा हमारा जो अगर BRP नहीं है तो स्टेटस कैसे प्रूव करने का. You may be able to prove your immigration status with a different way if you have not received your biometric resident permit or your BRP lost or stolen. So in this case, how we prove our immigration status to the government of UK? So if you need to prove your immigration status to get benefit or use the NHS, tell the government department, local council or NHS service that you dealing with your BRP has not arrived or your BRP is missing. सो काफ़ी सारे स्टूडेंट के जो भी क्वेश्चन है रिगार्डिंग बायोमेट्रिक रेसिडेंट परमिट, अगर आपसे कहीं से गलती से कहीं से लॉस्ट हो जाती है, स्टोलन हो जाती है, तो काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन you will get it from here. If you are in UK, if you are outside in UK, what necessary steps you need to take it out. If you are in UK, you have to report within 3 months. If you won't able to report, मैंने पहले ही बताया कि आप रिपोर्ट नहीं कर सकते. तो देखो इधर क्लियरली मेंशन किया है कि you can be fined up to £1,000. If you are in outside the UK, what you need to do? So if we are outside in UK, first things we need to report, like our BRP is stolen or missing. We won't able to apply for new BRP, but we can apply for the replacement BRP visa, and इसकी cost होगी near about £154. So you can apply for replacement BRP once you arrive in UK. If you find your BRP after report it lost or stolen, you will not be able to use your BRP if you find after you report it lost or stolen. If you are in UK, you still need to apply for replacement. If you are outside the UK, you still need to apply for replacement BRP visa when your replacement visa is arrived. So अपना जो भी पुराना जो BRP था, we have to cut in half and we have to submit to home office, which is like the above given address. So ये सब necessary step है when you lost your BRP. बस तो आज की वीडियो में यही था. इफ़ यू हैव स्टिल क्वेश्चंस रिगार्डिंग योर बायोमेट्रिक रेसिडेंट परमिट, यू कैन मैसेज मी प्राइवेटली और यू कैन ड्रॉप मी email or you can message me through Instagram as well. Hope you like my video. If you like my video, don't forget to subscribe my channel. Please like, share and subscribe, and see you soon with the next video. Bye for now.